हेलो गाइस, वेलकम टू करेक्ट ट्रैकर स्पेशल लाइव शो इन द एयर। मैं हूं चिराग मनोजा आपके साथ। इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड टी20 मैच खत्म हो चुका है और इंडिया ने कमाल किया एंड इंडिया वन द मैच बाय 6 विकेट्स। मतलब टी20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया एकदम से अनस्टॉपेबल है और अभी इंडिया ने अफगानिस्तान रोमानिया के रिकॉर्ड की बराबरी की। लगातार 12 टी20 मैचेस जीतना मतलब जबरदस्त, और पाकिस्तान के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। पाकिस्तानी एक ओपोनेंट के अगेंस्ट सबसे ज्यादा मैचेस जीते वर्सेस जिम्बाब्वे 16 टाइम्स, और इंडिया ने श्रीलंका को हराया 17 टाइम्स। तो जबरदस्त ये सीरीज रही इंडिया के लिए, स्पेशली श्रेयस अय्यर के लिए। इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम। मेरे पास तारीफ के लिए शब्द कम पड़ रहे, तो बुलाते प्रत्या तिवारी को। Absolutely, Chirag. I think we were discussing and we predicted that it's going to be 3-0. Was not a difficult prediction to make. जिस तरीके का form India ने अभी तक दिखाया, it was a rather easy prediction, you would say. And we see that meme, that eat, do something, sleep, repeat. It is becoming Right. that kind of a habit now for Rohit Sharma. Just eat, a clean sweep, sleep, and repeat, because he is doing that back to back in such great fashion. And the way India has Good. outplayed, I mean, today, if you look, nothing really going Sri Lanka's way. A little disappointing as well, because after the kind of show they had put up yesterday, the previous night, I was expecting a little bit more fight from them in this game. But right from the start, I mean, we saw what Siraj and Avesh Khan did with the new ball, and ever since those setbacks, I mean, thanks to Darshan Sanuka again, because had it not been for him, they were probably not even looking for like a 120 or 110 score at a point of time. Right. I think very, very disappointing this start of the series of the T20I leg. India taking it very convincingly, not just winning 3-0, but winning all the games very convincingly. Again, 3-4 overs to spare, and yesterday as well, and today as well. So I think full marks. I mean, 10 on 10 performance in almost every department to India. प्रत्या अगर देखा जाए तो अवेश खान को जब भी मौका मिला है उन्होंने मौके पे चौका लगाया, और आज भी बेहतरीन परफॉर्मेंस। वो दो लास्ट ओवर में थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, लेकिन ओवरऑल देखे तो कमाल का परफॉर्मेंस। बिल्कुल, एंड आई थिंक एज आई सेड कि आज एक अच्छा मौका था उनके पास में अपना टैलेंट इस लेवल पे दिखाने का, बिकॉज आईपीएल ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट आई मीन प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रूव योरसेल्फ, but international cricket, it's absolutely different when you come to this kind of a level. You are playing against international caliber players, then performing, it becomes all the more important. So I think he has put his hand up again today. 4 overs, I mean, economy very, very good. I think, I mean, anything, even seven in this format, you consider that good. If you're bowling less than, I mean, you're not even giving a run a ball, that absolutely is gold dust. And I think, and a maiden over as well for him in this match. So I think he was again on top of his game, and well supported as well by Mohammad Siraj up the order, because these couple of strikes that he managed to take inside the power play, that was again a key factor in which, which kept Sri Lanka to a lower kind of a total. And as I said, I mean, had it not been for that counter attack lower down the order, probably India would have sealed this match even earlier. But again, very impressed by Avesh Khan. And I think, yes, if he can maybe, because there's not a lot of T20 cricket that now India is going to play, because there's the IPL, and then there are a couple of test matches. Then South Africa comes to India. So there's a little bit of time. But in this one game, that opportunity he had, I think he completely capitalized and utilized it very properly. Avesh Khan. राइट। राइट। प्रत्या अगर देखिए हम श्रीलंका का, दो श्रीलंका ने सीरीज गवाई बहुत बुरी तरह, मतलब तीनों मैचेस वो हारे। लेकिन बिगेस्ट जो पॉजिटिव रहा श्रीलंका के लिए वो थे दसुन शनका। आई मीन लास्ट के बिल्कुल दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया। उनका जो ओवरऑल आप देखो, उनका स्ट्राइक रेट है 110 का, लेकिन दोनों मैचेस में वो 150 अबव है। तो कमाल का मतलब एक परफॉर्मेंस देखने को मिला कैप्टन। बिल्कुल, देखिए, आई मीन, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, बिकॉज आई थिंक इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, सपोर्ट नहीं था आज भी उनके पास में, बट जो श्रीलंका का टोटल था, नियरली 50-55% ऑफ द रन्स केम फ्रॉम हिज बैट. एंड he actually showed that, it was more of failure of application and not being able to apply themselves, because he was actually tonking those big ones, and he is someone who has this ability to hit the long ball, and he did that even previous night and again today. Yesterday again was another blinder. So was today's. I think 9 fours, 2 sixes, a brilliant strike rate over close to 200 almost. So I think he took it. I mean, he was the lone warrior of sorts, because if you talk about the others, the second highest score, it was 22, 23 in the Sri Lankan batting order. So I think when you see that, I mean, you can see how wide the gulf was. That someone scoring a 74 and the second highest score in the scorecard being just 20 or 22 odd. It just goes on to tell that it was completely his show tonight. But I think that, yes, he again has kind of put a foot forward and shown all the franchises, even with the IPL coming. You never know. I mean, because we see so many times
कि किसी को इंजरी होती है उसके कारण someone else is drafted in. And with this kind of a performance right before the IPL, I would not be surprised if he might just get a chance, because this year we also saw some Sri Lankan players getting a chance in the IPL after the performance they have given in the recent past. They have made a spot for themselves. You might as well see Darshan Shanuka inside someday or the other. राइट अभी पर हमने देखा कि अभी जो कल के मैच में और आज के मैच में डेथ ओवर्स में जो इंडिया का मतलब अभी आप देखो कल के मैच में जो हुआ 5 ओवर्स में 80+ रन और आज के मैच में लास्ट के ओवर्स में बहुत सारे रन बने तो अभी सभी एरियाज हम कवर कर चुके हैं ओपनिंग सॉर्टेड है मिडिल ऑर्डर्स में बहुत सारे बैट्समैन लेकिन वो जो डेथ ओवर्स में एक जरूरत होती है T20Is में कि वहां पर आपके बॉलर्स को कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग करनी होती है रन रोकने होते हैं वो इंडियन टीम से कहीं देखने को नहीं मिल रही 2 मैचेस में और अभी इनका जो बैटिंग लाइनअप है श्रीलंका का वो इतना लीथल नहीं था तो वो कहीं ना See, कहीं सरकार देखिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बड़ी चिंता की अभी ये बात होगी। देखिए अगर ये 2-3 सीरीज लगातार चल जाता है वर्ल्ड कप के पहले तो हाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी चिंता होना चालू होगी। बट आई थिंक कि आज के गेम में अगर आप बात करें तो आई थिंक जो स्टार्ट था बॉलिंग का, जब नई बॉल से पावर प्ले में मेरे ख्याल से कुछ 18-20 रन पे 3 विकेट थे श्रीलंका के उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके कारण ये था कि वो जो डेथ ओवर्स में अगर थोड़े से रन गए भी तो भी आप देखिए कितने रन वो इवेंचुअली बना पाए। दे कुड नॉट इवन क्रॉस 150। सो आई थिंक कि डेथ ओवर्स थोड़ा सा कंसर्न था, बट अगेन ऑल्सो आज के गेम में यू वर प्लेइंग अ लॉट मेनी यंगस्टर्स, ब्रिंगिंग इन, आई मीन 4 changes, you do not see that happening very often, because राइट it was a case that India had already pocketed the series, so they thought that okay, you can give a chance to your bench strength. But there was no Jasprit Bumrah, Mohammad Shami is not even a part of the series, so there are key players who are missing out. And I mean, even Deepak Chahar, Shardul Thakur, when these people come in, when these players come in, because in your World Cup you will be focusing on playing your best 11. So then when these players come in, I think that most of these issues for India would be sorted. So there's not too much to worry about, because despite all of that, you see, I mean, India has won convincingly. So even if it's not that that concern has actually led to a loss or some sort of a disadvantage, as long as they are winning the games, I don't think that these things would bother them too much. But of course, you have to, you have to make sure that, because in the tournament when you go to the World Cup, you of course cannot go with an indisciplined bowling lineup which is not being able to contain the runs in the death overs. So if this goes on for say a couple of more series, then maybe it becomes a concern, but nothing as of now for me. राइट और प्रत्या अभी आपने T20 वर्ल्ड कप की बात की तो अभी श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर विराट कोहली अब जैसा आगे कम बैक करेंगे तो क्या श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर आप देखते हो नंबर 3 पर वो खेलेंगे कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अभी जबरदस्त परफॉर्मेंस इस सीरीज में तो आउट ही नहीं हुए मतलब तीनों मैचेस में Bilkul, I mean, and look at all of those performances, Chirag. All of one after the another, all of them are match-winning performances. राइट He was also the player of the match in the previous game, and I won't be surprised if he ends up bagging that award again tonight, because solid knock. I mean, 9 4s, 1 6. Again, a great strike rate, just 45 balls for his 73, and unbeaten. I mean, finishing unbeaten, that is the best. I mean, you really feel content when you not just play a good knock or you contribute to the team, but you also go on to stay unbeaten. That means you have finished the job. So I think problem of plenty, as we were even discussing in the pre-show, as I said, कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये बनती जा रही है कि एक ही स्पॉट पे इतने खिलाड़ी हैं कि आपको यही हाँ नहीं समझ में आता है कि आप किसे खिलाएं और किसे बाहर बैठा लें। बिकॉज राइट इफ यू सी इवन इन दिस सीरीज कितने सारे प्लेयर्स हैं जो हो सकता है हमें शायद T20 वर्ल्ड कप में ना देखने को मिले। मे बी एन आवेश खान माइट नॉट गेट अ चांस जब सारे चाहर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी सब लोग वापस आ जाते हैं। Even राइट Deepak Huda, for that matter, you might not see him playing all the games in the T20 World Cup as well, because there is Venkatesh Iyer, there's Hardik Pandya, a prospect for him as well. No matter even if he's not in the team, he still is. Speaking of Virat Kohli, see, I think number 3 spot जो रहा है उनका लंबे समय से टीम में रहा है, but in this particular format, as I said, कि आप rigid नहीं हो सकते, you have to be flexible and you have to pick your best combination, and you need to ensure कि आपका best खिलाड़ी वहां खेले जो जिस पोजीशन के लिए वो बना हुआ है। अभी तक इस सीरीज में जो हमने देखा है, द वे श्रेयस अय्यर इज बैटिंग, he is just owning. I mean, he is bossing the game. This is what you call bossing the game, because he is just not giving anything away to the opposition. So I think that you might as well see that he might stick around. And but not to forget one thing, that these games have been played in India. The World Cup is not in India, so you have to factor राइट in that as well. But I won't be too surprised if the management actually goes on to decide to have him there for that spot. What I'm rather worried about is that who do you pick in Surya Kumar Yadav and Shreyas Iyer, because both of them have really raised their hand up. Kohli, of course, is going to come in, but that actually will be the biggest headache. That Shreyas Iyer versus Surya Kumar Yadav, what they are going to pick. So thankfully, none of us is a selector, and that's a good place to be. You don't want to be an Indian selector because there's so much headache. You don't राइट want to be ये that. मीठा सिरदर्द वो जैसे कहते हैं ना मीठा सिरदर्द मतलब
होना एक वो सही बात है, मतलब वो चाहते भी हो और कई बार लगता है कि ना भी हो, क्योंकि बहुत टेंशन होती है सीरियसली। ऑब्वियसली आई मीन वी से कि एक अच्छा हेडेक है, बट द पॉइंट इज कि हेडेक कभी खत्म नहीं होता है इंडिया में, so that हाँ। becomes a bit of a problem क्योंकि जब आप किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं you are never being able to it's actually see there's a pro and con of everything. So I think हम्म, having this great a depth of a pool of talent, it becomes slightly disadvantageous as well because you really cannot at times justify your selection decisions, and that is the reason that you would see Indian selectors are often in the midst of criticism because कि आप सबको खुश रख नहीं सकते और आपको खिलाने तो सिर्फ 11 ही खिलाड़ी हैं, तो हाउ हाँ, डू यू इवन सेलेक्ट, एंड इवन सेलेक्ट भी आपको शायद 15 करना है बट लड़ रहे हैं शायद 25 या 26 खिलाड़ी उस स्पॉट के लिए, so that's why I said that being an Indian selector is a one heck of a task that राइट। बस ये वर्ल्ड कप में ये दिक्कत ना हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वहां मतलब जाते जाते सब कुछ सॉर्टेड हो कि प्लेइंग 11 ये है, हाँ ये बेंच स्ट्रेंथ है, तो मतलब तब तक सब सॉर्टेड होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। Yes, तो I आप think see देखते if you talk राइट। about, I mean, we have an IPL as well, and that again, that is a long tournament, 60-70 matches now with 10 teams. So I think कि वो भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, although इंटरनेशनल में आप बहुत ज्यादा कई बार नहीं कंसिडर करना चाहते हैं आईपीएल को, बट स्टिल हमने देखा है आईपीएल से उठ के बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं, एंड दे हैव एक्चुअली गॉन ऑन टू, आई मीन इफ यू लुक इवन जसप्रीत बुमराह, आवेश खान, हर्षल पटेल, दीज ऑल दीज प्लेयर्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ द आईपीएल इटसेल्फ, सो मुझे लगता है कि वो भी एक मदद करेगा बहुत हद तक कि क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि 2-2.5 महीने का टूर्नामेंट है. I think that will also play a crucial role in identifying those 11 set of players, because best 11 you have to identify that is the राइट। toughest part, and but that is very important as well. और मुझे तो लगता है आईपीएल में 3-4 प्लेयर्स और निकल कर ना आ जाएँ। मतलब You never वो know. कुछ और ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म ना कर जाए और फिर एक टीम के सामने हो कि इन्हें भी लेना है, तब और ज़्यादा सिर दर्द होगा, राइट। तो Absolutely. अब देखते हैं सोशल ट्रैकर पे क्या है हमारे पास। वो आज काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। तो पहला अच्छा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, श्रेयस अय्यर कंटिन्यूज हिज रेड हॉट फॉर्म एंड गेट्स टू हिज थर्ड कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरी इन द सीरीज। टेक अ बॉस श्रेयस अय्यर। कमाल की इनिंग्स, श्रेयस अय्यर की तारीफ बनती है। जिस तरह से ये थ्रू आउट द सीरीज खेले, रोहित शर्मा सरपासिंग मलिक एंड बिकम द मोस्ट कैप T20I प्लेयर। हाँ, एक ये भी रिकॉर्ड जो रोहित शर्मा ने अपने नाम किया, सबसे ज्यादा T20I मैचेस। बिल्कुल. और देखते हैं क्या है हमारे पास सोशल ट्रैकर पर। तो प्रत्यय, आपको क्या लगता है कौन जा सकता है आज के मैच में, मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज? Player मुझे of लगता the है series, श्रेयस see, for me personally, yes, it has to be, I mean, Shreyas Iyer, because जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, as I said कि तीनों मैचेस में न केवल हाफ सेंचुरी, but they also, I mean, they all of them were match winning knocks. He went on to stay unbeaten, and that is not a small feat. I mean, I mean, 57, 74, and 73 tonight, close to 200, 210 runs, and not getting dismissed. I mean, he really made the life of the bowlers difficult. So I think he is definitely a fitting candidate for the award. And not just that, I mean, even Player of the Match award, he could well end up bagging that. But again, I mean, kudos to India, another series in the pocket. And I mean, now going into the Test series forward, they again, I mean, they are playing at home. We know that India is absolutely formidable at home, but still, you need to win the matches. You need to go out and you need to do it again and again, no matter what the opposition. You have to apply yourself, and India has consistently done that. So, great signs for the team and for the entire management as well. चलिए, थैंक यू प्रताप फॉर जॉइनिंग। एंड गाइस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, तो आई डोंट नो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप हमें फॉलो करो फॉर ऑल द क्रिकेट अपडेट्स। थैंक यू गाइस।